Hi students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sagar Pandya and today we are going to start with a very interesting chapter of our syllabus. That is one of the most interesting and one of the most beautiful chapter, a bit tricky. That is chapter number 4, Contemporary India. Challenges to peace, stability and national integration. Let's begin. So when we start learning about chapter number 4, it says about contemporary India. Contemporary India मतलब क्या? आज का India, today's day India. And आज के India में when we see there are so many challenges there. Like for example, challenges with respect to peace, challenges with respect to stability, challenges with respect to national integration, that is unity. So अगर हम लोगों को ये सब challenges आ रहे हैं, let us begin with the first part, learning about India. Now India, as we all know, it is a democratic nation. Yes, democracy. What is democracy? Democracy is government of the people, for the people, by the people. Again, democracy is government of the people, for the people, by the people. That is why a democratic society is likely to have a diversity of views. Such diversity arises from a variety of social, economic, political and cultural factors. इतना सारा फैक्टर्स जब भी आ रहा है मतलब डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू मेनी थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू people traveling from different areas coming to India. Yes. Coming to a particular place. Yes. Do they speak same language? No. Do they follow same religion? No. But then do they live in peace? Yes. That is why it is called as diversity, and India is the best example for unity in diversity. So in India, the situation is further complicated by factors such as caste, religion, poverty, illiteracy and demographic pressures. Now, कास्ट सिस्टम इतने सालों से चल रहा था, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता था. ऑन द बेसिस देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म. सो इतने सारे अगर रिलीजन है इंडिया में, इसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी. Along with that, demographic pressure मतलब population बढ़ने का pressure and ethnic and linguistic diversity. The country hence has witnessed many disturbances also with respect to agrarian unrest. There are farmers movement that come across, labor and student agitations, that is fight backs, communal riots, that is religion के basis पे fight back करना, and caste related violence. Hence, a lack of good governance and poor implementation of laws are the major factors for public disorder. ये बेसिक फैक्टर्स है जहां पे ये पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली, अभी ये बात है 2021 की फरवरी एंड जनवरी की, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, there are so many protests that have come across. Now protests with respect to agricultural or agrarian unrest, farmers movement have come across, and जब ये farmers movement आया, there are many people who follow that particular thing and accept the fact that there is certain inequality which is there. कुछ लोग हैं जो वो लोग accept नहीं करते and government को support करते हैं. अभी वो अपने ऊपर है. Like me and you, we are the future of this country and we are making this country in such a manner जिसमें फार्मर्स को इंपॉर्टेंस देना है प्लस इकोनॉमी बूस्ट करना है. दोनों साथ में कैसे चले वो देखना जरूरी है. एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टुगेदर एंड मेक अ गुड गवर्नेंस हियर. And here, the implementation of laws, the implementation of major factors with respect to public disorder is necessary. Hence, a public order, stability and peace implies a harmonious state of society. जब भी public order रहेगा, yes, stability रहेगा, yes, peace रहेगा, जब ये तीनों चीज रहेगा, that is the moment जब भी हम लोगों को harmonious state of society divide करना है, rather to be saying harmonious state मतलब peaceful state maintain करना है. This implies the absence of disturbance, riots, revolt and lawlessness. मतलब अगर ये चार चीज नहीं रहेगा, क्या? Disturbance, riots, revolt and lawlessness. अगर ये चार चीज नहीं रहेगा तो कैन आई से इंडिया में पीस मेंटेन होगा? ऑब्वियसली. क्यों? बिकॉज ये सब लोग सेटिस्फाइड है. देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस. अगर सेटिस्फाइड रहेगा तो
सेटिस्फाइड रहेगा तो डिस्टर्बेंस नहीं है तो कोई राइट्स नहीं करेगा, राइट्स नहीं करेगा मतलब कोई फाइट बैक नहीं करेगा, मतलब देयर विल बी नो रिवोल्ट, एंड रिवोल्ट नहीं रहेगा तो कोई लॉ तोड़ेगा क्या? नहीं. Hence, there will be no lawlessness. There will be absence of all these things. That is one of the main reason why maintenance of law and order is universally accepted. Maintenance of law and order is universally recognized as a prime function of the state. Peace and stability are one of the crucial requirements for the political, economic, and socio-cultural development of the state and for the development of that state. The lack of this is likely to lead the divisive tendencies in the state. Divisive, divide करने वाला ये टेंडेंसी क्रिएट होता है अगर ये सब क्रिएट हुआ तो. It is the function of the state to ensure that there is peace and stability and the nation remains united. Hence, in any state, there are likely to be diversified groups in the society. In the establishment of dialogue between them is also initiative that the state would be expected to take. This is hence the progress of the nation, or rather I would say this is hence the process of the nation building and national integration. इससे हम लोग यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं. यूनिटी मेंटेन करना, बट ये मेंटेन कैसे होगा? व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री. जब भी हम लोग कंट्री के बारे में सोचते हैं, नेशन के बारे में सोचते हैं, गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स दैट नेशन फर्स्ट. Nation first मतलब you are having love for that country. What do you mean by that? Nationalism. नेशनलिज्म आया एंड ऑल्सो उसके साथ क्या आया? स्टेट मतलब गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस. दीज आर अमंग द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन द पॉलिटिकल साइंस विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. बट नाउ लेट अस रिवाइज अ फ्यू पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, नेशनलिज्म के बारे में. लेट अस लर्न समथिंग अबाउट नेशन. Now nation is a community that is bound together by a feeling of unity and oneness based on certain factors. They are people who identify socially, culturally, politically and want to establish a separate identity. मतलब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस. तो ये पॉइंट्स कौन से हैं? नेशन इज अ कम्युनिटी. कम्युनिटी कौन सा है? दैट इज बाउंड टू बी टुगेदर. आई रिपीट, बाउंड टू बी टुगेदर कंपल्सरीली. सी, इंडिया में हम लोग बोलते हैं इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई हैव द फीलिंग ऑफ प्राइड. हम लोगों को गर्व है हमारी कंट्री पे, एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द फीलिंग ऑफ वननेस. That is the pledge जो हम लोग हमेशा लेते हैं. There are certain people who identify socially, culturally, politically and want to establish separate identity for themselves. So there is a sense of oneness that is psychological and born out of commonness of whether it be culture, whether it be ethnicity, that is tradition, whether it be religion, whether it be language or whether it be history. तो इसके बेसिस पे लोग साथ में आते हैं. जब भी लोग ये इसके बेसिस पे साथ में आते हैं, that is the kind of oneness जो क्रिएट होता है. अभी सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता है, इंडिविजुअली लोग माइंडसेट अलग अलग रखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा तो आई विल बी थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री, बट दूसरे साइड पे जब भी देखे तो देर आर सर्टन पीपल जो अभी मेरा दोस्त है जो लैंग्वेज के बेसिस पे वननेस देखता है, दूसरा एक दोस्त है जो हिस्ट्री के बेसिस पे वननेस देखता है. मतलब हर एक बेसिस पे लोग अपना अपना माइंडसेट क्रिएट करते हैं, बट देर इज वननेस फॉर द नेशन, दैट इज फॉरमोस्ट. सो first thing is nation, second is nationalism. Nationalism is a sense of political identity. They gain a sense of identity and self-esteem by this identification. Nationalism self identity create करता है, identification create करता है. Hence it is a force that creates the feeling of oneness in a community based on ethnicity, tradition, race, religion, language or any other factor. Oneness, nationalism, love for the country. Now when people of a nation want to become a sovereign country, मतलब want to create a sovereign country, sovereign मतलब self ruling country. क्या? self ruling country. It means that they are demanding the right of self determination. Again, self determination or sovereign मतलब self rulingness. It is the urge, a need for political self-determination that leads a nation in the right direction of statehood. What do you mean by that? 1947 में
जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला मतलब सेल्फ रूल मिला, यस. सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला, यस. इंडिपेंडेंस मिला, यस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 1942 में जो मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, डिड दैट हेल्प? यस. देयर वाज अ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यस. 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, यस. 1933 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, यस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये सब पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऐसे पॉलिटिकल माइंडसेट थे, ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे दैट क्रिएटेड अ राइट डायरेक्शन टू द स्टेटहुड. व्हेन डज अ नेशन बिकम स्टेट? अ स्टेट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग स्टेट का बात करें, स्टेट मतलब क्या? महाराष्ट्र नहीं, इंडिया का गवर्नमेंट को बोला जाता है स्टेट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था पहले, दैट इज इन 11th स्टैंडर्ड. सो अ स्टेट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज टू क्वालिफाई फॉर स्टेटहुड. फर्स्ट थिंग, sovereignty, self-rulingness. Second, independent government. Third, territory. And fourth, population. ये अगर चारों चीजें रहेगा, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, दिस विल क्वालिफाई दैट स्टेटहुड, दैट गवर्नमेंट टू क्रिएट, एंड वो गवर्नमेंट क्रिएट करेगा विच विल बी वर्किंग फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री. Next, a state may have people belonging to different ethnicity, different race, different religion, different language. These people may have a sense of their own identity, but they desire to come together to create a state. Most of the states in the world are multi-ethnic, multi-religious, multi-racial. Best example, India. India में हम लोग अलग अलग ethnicity, that is culture follow करने वाले लोग हैं, yes. अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, यस. मल्टी रेशियल, अलग अलग स्किन कलर है अपने पास, यस. बट देन टू वी लिव पीसफुली, यस. दे आर मल्टी कल्चरल प्लूरलिस्ट एंटिटी. That is the basic problem that any state would face, therefore, is the problem of national unity, integrity, and consolidation. Hence, this problem is the problem of national integration, that is national unity. But the question arises, sir, what is the role of the state here? So the values of nationalism, secularism, and democracy and goals, economic development, and social change are the ones that determine the role of the state. मतलब ये सब maintain करना, लोगों को nationalism maintain करवाना, development लाना, economically, secularism, that is every religion being equal, democracy and goals. And this creates the role of the state. ये government का role है. This role may be described as follows, starting with the first one, the peace and order. The state ensures the peace and order in the society is there. The core purpose of the state is protection. This role has been described as the state building. मतलब ये state building का purpose है, that is to maintain peace and order, that is lawlessness नहीं. There is absence of lawlessness to follow the rules and regulations given by the government. The survival of the political system may be threatened from international and domestic environment. The maintenance of security and survival of the state, its constitution and political order is one of the key roles of the state. मतलब maintenance of the security, maintenance of survival of the state, कि भाई यहाँ पे अगर democracy follow कर रहे हैं, people's rule है, तो it is done in a peaceful manner. Next, second point, economic development. Now the state is expected to interfere in the economic life for the purpose of promoting industrial and agricultural growth and economic development. मतलब बेसिकली फर्स्ट तो पीस एंड ऑर्डर था, पीस मेंटेन किया. सेकंड इकोनॉमी डेवलप करना है. सेकंड इकोनॉमी डेवलप करना है मतलब क्या? इकोनॉमी कैसे डेवलप करेंगे? बाय एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय स्टेबिलिटी. हेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ वुड एंश्योर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल. This does not imply creating a socialist system and planning, but it implies that the state must be a facilitator of economic development. मतलब क्या? मतलब यहाँ पे सोशलिज्म फॉलो करना जरूरी नहीं है. सोशलिज्म मतलब क्या? यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट इंटरफियरेंस जरूरी नहीं है. यहाँ पे जरूरी क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेटर बनेगा. मतलब क्या? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बिजनेसमैन है उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ. अभी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसको देगा? टू द पीपल. एंड दैट इज वाई वो लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा. अभी लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कहना इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो मतलब सी बिजनेस बढ़ेगा,
लोगों का डेवलपमेंट हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा, बिजनेस भी बढ़ रहा है, लोग भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब बिजनेस और बढ़ेगा तो टैक्सेस भी बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा कि कम होएगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, बिकॉज टैक्सेस पे करके गवर्नमेंट को जा रहा है. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, नेशन बिल्डिंग. This refers to the problem of ensuring that the diversity in a society does not lead to disintegration. Disintegration मतलब division of the state नहीं हो रहा है. Nation building hence is closely associated with the idea of national integration. National integration, that is national unity. Next part, governance. Involvement of the members of the society in the decision making process of the state is good governance. This is sometimes referred to as democratization. क्या? Democratization. इसका मतलब क्या हुआ? It means that involvement of the members of the society, मतलब कहना इसे इंडिया में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सर ये तो वही स्टार्टिंग का वापस अभी एंड तक आ गया ना. एग्जैक्टली. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब पीपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा. जब भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स दैट पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बट खाली पीपल वोटिंग करके पार्टिसिपेशन करेगा क्या? नहीं. तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं, या डेमोक्रेटाइजेशन किसको बोलते हैं? व्हेन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज नॉट ओनली बाय वोटिंग, but making the government aware about the needs, about the whatever the things they are required, and उसको अगर बोलेंगे तो this is sometimes referred to as democratization or the creation of a participatory state. Participatory, again नाम जैसे बोलता है, लोगों का participation होना चाहिए. तो पार्टिसिपेशन कैसे होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्टिसिपेशन, वेरी सिंपली वी कैन से के रोड्स अगर बराबर नहीं बने, ब्रिजेस नहीं बने, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होगा एंड लोग जाके बताएंगे कि यस दिस इज द नीड, ये प्रॉब्लम हो रहा है हमको. दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट, वेलफेयर. दिस रेफर्स टू द application of principles of social justice, fairness and equality. The state is expected to rectify the imbalances in the society so that the marginalized sections of the society do not suffer. Marginalized section of the society, जिनको अभी तक rights नहीं दिया जाता था, वो suffer ना करे, इसके लिए ये बनाया गया था. So when we talk about these welfare things, मतलब it works for the welfare of the people and the values of nationalism, secularism, that is every religion being equal, and democracy, and goals, that is economic development and social change, are essentially those associated with nation building. The problem of national integration is universal. अपने कंट्री का खाली प्रॉब्लम नहीं है कि यूनिटी नहीं था, हर एक कंट्री में नहीं था, बट अपने कंट्री में थोड़ा बरोबर से यूनिटी है. बीइंग डाइवर्सिफाइड कंट्री, इसके लिए हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मैं पहले बोल चुका हूं, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स अ डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल डाइवर्सिटीज टू बिल्ड अप a common identity. These diversities may be socio-cultural, regional, religious diversity, linguistic and economic nature. Such an identity may be labeled as nationalism. Nationalism in its efforts of creating a common national identity. Nationalism tries to promote the forces of unity in the nation. Hence, it seeks to reconcile the differences and forge a national rather than a sectoral perspective. National perspective, that is with respect to country. Sectoral perspective, that is with respect to one province. National integration does not wipe out the individual or group identities of various sections of the society. Like वो बोलते हैं ना कि अगर ये ग्रुप आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस दिया तो अच्छा रहेगा, या ऐसा ये लोगों को इम्पोर्टेंस दिया तो अच्छा रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. It does not try to create a homogeneous society. Homogeneous मतलब सेम सोसाइटी नहीं चाहिए. जैसे चाइना में हम लोग बोलते हैं कि भाई एक ही चीज फॉलो किया जाता है. नो, it only believes in creating a territorial nationality which overshadows subordinate group identities. For example, when we say we are Indians, it is a territorial nationality of being an Indian in the country of India. The subordinate identity of being a Marathi, Tamil, Punjabi, Hindu, Sikh, Muslim, Christian, etc. are not eliminated. मतलब हम इंडियन हैं, बट इसके साथ साथ हम लोग ये भी है.
So they remain subordinate to the territorial national identity of being an Indian. The Americans use the word salad bowl to describe the socio-political system. Their socio-political system. कि सब लोग एक साथ रहते हैं. The task of a nation thus is to recognize the regional, ethnic, linguistic, religious, etc. and diversity and seek to preserve, consolidate and strengthen its unity. This is hence, in essence, in the problem of national integration. So, when we talk about this part, there are certain values that we are going to learn, about which we are going to learn in the next video. Till then, dear students, like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Take care, stay blessed, bye-bye.